Can see this first question now. A valid answer is rotating about a known axis at a rate of 1.6 rotations per second on a smooth horizontal floor. On folding the cell close to the axis of rotation, the radius of gyration decreases by 20%. The final frequency of rotation. अगर उसने अपनी arms stretch out की हुई थी and she brings her arms closer, we are given that radius of gyration decreases by 20%. Radius of gyration decrease करेगा तो moment of inertia decrease करेगा, increase करेगा. Moment of inertia. Will it increase or decrease? अगर arms fold कर ली, arms fold कर ली, radius of gyration कम हो गया, moment of inertia में क्या change आएगा? बढ़ेगा या कम हो जाएगा? I'm not hearing any response. If she folds her arm, radius of gyration decreases by 20%. What happens to the moment of inertia? Decrease. Moment of inertia decrease करेगा तो conservation of angular momentum. Angular momentum is I omega. अगर moment of inertia decrease करेगा तो angular velocity increase करेगी. So you have to use the simple principle of conservation of angular momentum. Scapular momentum conservation. I1 omega 1 is equals to I2 omega 2. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n k स्क्वायर omega 1 हमें given क्या radius of gyration decreases by 20%. Means k dash is 80% of k. So radius of gyration is अब कम होगा तो how will it affect the angular velocity? ये substitution कर दो and find the answer क्या तो k dash की value omega 1 हमें given है it's 1.6. So you have to find the new angular velocity. क्या है सॉल्व करके एल का कैंसिल हो जाएगा omega 2s. Point 5 radian per second. Rotations per second. Clear. So momentum, angular momentum conservation use होगा. Next is if radius of Earth shrinks by 0.1% without any change in its mass, percentage change in duration of the day. Radius of Earth shrinks by 0.1%. Again, angular momentum conserve है. रेडियस श्रिंक करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो हमने बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ द डे
हमें ये गिवन है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व I omega is constant. Earth का 2/5 mr square omega 1 is constant. R square into इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और हमें दिया रेडियस 1% 0.1% कम हो गया तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आया टाइम पीरियड में चेंज distillation of phase that you can change my point in this हमारे पास कभी भी ऐसे इक्वेशन हो ना और परसेंटेज चेंज जो है 5% से कम दिया हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a delta x by x 200 is equals to t delta b delta y by y so यहाँ पे रेडियस की पावर 2 थी टाइम की पावर 1 थी तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया so it's 0.2%. X2 circular disk of moment of inertia 0.2 kg meter square and 2.3 kg meter square are rotating about its own axis at a rate of 200 rpm and 100 rpm both in same clockwise direction. If both are gently brought in contact to rotate about same axis, angular velocity of combination. दोनों अगर सेम डायरेक्शन में रोटेट करें सेम सेंस क्लॉकवाइज तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितना हो जाएगा बिकॉज इनकी सेंस ऑफ रोटेशन सेम है तो देयर एंगुलर मोमेंटम विल एड अप और फाइनली दे एक्वायर कॉमन एंगुलर वेलोसिटी आपने एक के ऊपर दूसरा रख दिया दे एक्वायर कॉमन एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज in finally when you place one disk over the other the moment of inertia will be I1 plus I2 and angular velocity is omega so you have to find omega so इसको solve कर लो जो भी आंसर आएगा I1 omega 1 plus I2 omega 2 so it's 400 into 140 140 140 concept clear है सब कोई next देखो A circular disk is rotating about a vertical in horizontal plane about vertical axis, passing through center of disk without correction with a time period of 0.2 seconds. If another disk is gently placed over it, time period of combination. Same concept, totally same concept. सिर्फ हमें दिया if another disk is gently placed, तो दूसरी disk move नहीं कर रही. Second disk is at rest. एक डिस्क रोटेट कर रही थी उसके ऊपर दूसरी डिस्क रख दी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा 2 इसमें 0 है तो
तो हमें पूछा टाइम पीरियड वुड बी ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। So यहाँ से you can find the value of t। हो जाएगा सॉल्व। फीड करके देखो टू ऑफ। इसमें ओमेगा 1 क्या लेंगे? फर्स्ट इसका भी टाइम पीरियड दिया है। So we'll take omega 1 is 10 pi. I1 I2 identical circular disk है तो I1 और I2 equal. This would be T is 2 by 5. So 0.4 seconds. The valid answer is rotating on a smooth horizontal floor with angular momentum L. The dancer folds her hand so that moment of inertia decreases by 25%. The new angular momentum. इसी क्वेश्चन जल्दी से बताओ आंसर। वैलिड आंसर मूव कर रही है, उसने अपने आर्म्स को फोल्ड किया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 25% कम हो गया, तो नया एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? All these numericals are based on conservation of angular momentum. तो अगर वो आर्म्स को फोल्ड करेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, बट एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम। सो अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल आल्सो बी L। इससे I decreases, omega increases such that I omega is constant. Angular momentum will remain L only. So angular momentum will be L. A metallic circular plate is rotating about its axis without friction. If radius expands by 0.1%, change in moment of inertia is. Radius expands by 0.1%. Circular plate. Circular plate की angular momentum क्या होगा? Circular plate, you say half mR square omega is constant. हमारे radius expands by 0.1%. Moment of inertia will change. So मैं ऐसे लिख सकता हूँ because mass remains constant. I is equal to kr square. That means delta I by I is 2 delta r by r. So if radius changes by 0.1%, moment of inertia will increase by 0.2%. Clear है? तो ये जो फॉर्मूला है ना जो मैं कर रहा हूँ आई स्क्वायर कैश में, ये 5% तक ही लगता है, इसके आगे फिर एरर बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको 5% यू कैन इजीली अप्लाई। The diameter of a flywheel is 1 meter. It has mass of 20 kg.
rotating about its axis with 120 rotations in 1 minute, angular momentum. हो जाएगा ये तो सॉल्व. फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी हमारे को दी है 120 रोटेशंस पर मिनट. रेडियन पर सेकेंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई विद 2/60. To find its angular momentum. Mass is 20 kg, radius is diameter is 1, so radius is half. Omega is 2. So 10 by. Clear है? Metallic circular wheel is rotating about its own axis without friction. Radius expands, percentage change in angular velocity. हो जाएगा ये I omega should be constant. तो अगर हमें दिया radius changes by 0.2%, you have to find the percentage change in omega. omega बढ़ेगा या कम होगा पहले? Expand कर रहा है, radius बढ़ रहा है, mode of inertia बढ़ रहा है, angular velocity कम होगी. A circular wheel है, तो half mr square omega, this should be constant. 2 delta r by r plus delta omega by omega is equals to 0. रेडियस अगर 0.2% बढ़ेगा तो ये 0.4% कम हो जाएगी. नेगेटिव साइन सिग्निफाइज कि r बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा. So it increases by 0.4%. अगर गेस भी करना है तो हमें ये तो पता चल रहा है अगर रेडियस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा. सो एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. सो इंक्रीज वाली ऑप्शन तो वैसे ही हट जाती है, सिर्फ डिक्रीज ही कर सकता है एंगुलर वेलोसिटी. A circular plate is rotating in a horizontal plane without friction about its own axis with a time period of 0.1 second. Another disk is gently placed such that combination becomes a thick circular plate. हो जाएगा. Same question अभी किया. I1 omega 1 upon I1 plus I2. Give angular velocity. A valid answer is rotating about its own vertical axis on a smooth horizontal floor with a time period of 0.5 seconds. Tensor force radius of gyration ये भी हो जाएगा. Similar questions है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ. अगर सब में एक ही कंसेप्ट लग रहा है कि I omega should be constant. और ये previous year है सारे. Similar question ही आया है. ये different है. A bullet of mass 50 gram is projected upward with an initial velocity of 200 meter per second. In direction, angle of projection is 60. The angular momentum of bullet when it is crossing the highest point with respect to point of projection. तो मैं ऐसे दिए. The body is at the highest point. First angular momentum बताएंगे. Highest point पे angular momentum कैसे निकालते हैं? Angular momentum का concept क्या था? Either r perpendicular into p or p perpendicular into r. अगर मैं देखूं मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी है हाईएस्ट पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना होगा?
अगर MU पास दिया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस कितना है perpendicular distance is equals to maximum height angular momentum कितना आ गया R perpendicular is maximum height value was MU. सब्स्टिट्यूट करना देखो क्या आ रहा है ची को 10 लेना है मास 50 ग्राम दिया है उसको केजी में चेंज कर दो सॉल्व इट एंड फाइंड द आंसर क्या आता है इसको देखो इसकी find the answer सेवन पॉइंट फाइव इंटू 10⁻³ बिल्कुल ठीक है सो बी पार्ट आंसर आएगा वैल्यूज पुट करके रिपीट कर सकते हो ये आंसर आ रहा है इसमें total energy of rolling cylinder is 24 joules total energy दिया rotational energy बता रोलिंग सिलेंडर की रोलिंग बॉडी की कोई भी रोलिंग बॉडी है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस हमें टोटल एनर्जी दिया है 24 और रोटेशनल एनर्जी बतानी है अगर आपको याद है हमने इक्वेशंस लिखे थे रोटेशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी रोटेशनल एनर्जीज फिर आई को लिख दिया था एम के स्क्वायर and omega square is तो हमारे पास जो रेशियो आई थी तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ पे हमें सॉलिड सिलेंडर दिया तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज half so this becomes half on 3/2 so means rotational energy is 1/3 of total energy तो आप इस फॉर्मूला को याद रखोगे एमसीक्यूज के लिए क्लास में लिखे थे वैसे so rotational energy to total energy is के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और अगर ट्रांसलेशनल टू टोटल एनर्जी की रेशियो पूछे तो linear energy to total energy that would be 1/100 तो ये फॉर्मूला then metal disc
of radius 25 centimeter and mass 2 kg starts from rest, rolls down and climb plane. Its rotational kinetic energy is 8 joule at the foot of inclined plane. Then linear velocities. So a metal is clear, starts from rest from top and then rolls down in climb plane. So radius here. Mass here. Speed when it reaches the bottom of the climb. इसकी rotational kinetic energy 8 है. अगर हमारे पास मेटल डिस्क है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ. सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही बन रहा है जो सिलेंडर था. के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज हाफ. इसका मतलब टोटल एनर्जी का जो 1/3 है that is rotational energy and 2/3 is translational energy. 1/3 is rotational. मतलब for this is 8. So linear is third. That means 16. तो लीनियर एनर्जी 16 है मतलब हाफ एम वी स्क्वायर 16. C will be 4 meter per second. क्लियर है. मैंने पिछले चैप्टर का पिछले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट यूज कर लिया कि रोटेशनल एनर्जी इज 1/3 of total energy and translational energy is 2/3 of total energy. So if rotational energy is 8, translational energy will be double of that 16. तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 16 है. मास गिवन है v निकालना है. रेडियस चाहिए नहीं था ऐसे ही दिया था. When a solid cylinder is rolling on a level ground at a speed of 4 meter per second, if the kinetic energy is 120 joules, the mass of cylinder is. Gotta solve this. I mean, it's rolling. If cylinder is rolling, और उसकी total energy दी है kinetic energy, तो you have to find mass of cylinder. क्या है आंसर? लोन कर रहा है.
G's a solid cylinder है तो k square by r square is half 3/4. Speed दी है 4. k square is 16. Mass with 10 cases. Yeah. A solid cylinder at rest at top of an inclined plane of 2.7 meter rolls without slipping. If the same cylinder has to slide down frictionless plane and acquire the same velocity as that acquired by center of mass of rolling cylinder, kind of inclined plane is. क्वेश्चन समझ में आया हमें ऐसे गिवन है सॉलिड सिलेंडर 4.7 मीटर की हाइट से स्लाइड करके नीचे आता है and acquires a velocity. हमें दिया है कि हाइट से स्लाइड कर क्या है रोल करने की जगह फिर इसकी स्पीड सेम है स्लाइड करके यहाँ पहुंचे ताकि इसकी स्पीड में डील एच के टॉप कैसे करें इसको सॉल्व दो मेथड हो सकते हैं एक तो मैं एक्सेलरेशन के टर्म्स में निकाल कि अगर कोई बॉडी रोल करके आती है इंक्लाइन पे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था अगर बॉडी स्लाइड करती है तो जी साइन थीटा होता है रोल करेगी तो फॉर्मूला क्या था acceleration of body rolling down inclined plane. सीखो नहीं यार g sin theta upon 1 plus k square by r square. अब हमें दिया है तो बॉडी स्लाइड करके आई तो भी स्पीड भी होनी चाहिए रोल करके आए तो भी स्पीड भी होनी चाहिए तो h कितना हो कोई और मैथड सजेस्ट कर सकते हो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं इस साइड को ले लो h1 इस साइड को अगर मैं फर्स्ट केस में एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखूं potential energy gets converted into rolling energy. और सिलेंडर है तो k square by r square is half 3/4 but अगर बॉडी स्लाइड करके आएगी mgh2 is equals to सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी हमें ये दोनों केसेस में बी सेम देखो h2 निकालना है mv स्क्वायर को यहां से मैं लिख सकता हूं
mg square is 4 by 3 mgh. को इधर सब्स्टिट्यूट कर m cancel, c cancel. So h2 is 2 by 3 h1. It's 1.8 meter. आपको एक्सेलरेशन का चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. You apply energy conservation. रोल करके आएगी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी gets converted into rolling kinetic energy, and if body comes sliding down, then potential energy gets converted into translational kinetic. समझ में आया मेथड? ये कुछ नहीं आ रहा समझ तो. Translational kinetic energy of rolling solid sphere is 35 total energy. Solid sphere. यहाँ भी रेशो क्या लिखेगी? Linear kinetic energy to total kinetic energies. To solid sphere. A square by r square is 2 by 5. Let us substitute for the linear energy or total energies. 5 by 7. हमें टोटल एनर्जी बतानी है. So it will be 49 joules. समझ में आया कि सही है? बस एक एनर्जी दी थी, दूसरी एनर्जी निकालते हैं. Rotational kinetic energy of body is 80 joules. The moment of inertia of body about its own axis of rotation is 4 into 10 raised to the 7. Angular momentum of the body. Rotational kinetic energy दिया, angular momentum बता दे. Kinetic energy और linear momentum में relation क्या था? E is equal to E square by 2m. तो rotational kinetic energy और angular momentum में E is equal to L square by 2i. Rotational kinetic energy. It's half I omega square. इसको मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं, I से डिवाइड. I square omega square is L square. So rotational kinetic energy is L square by 2. This implies that L is equals to under root 2i या values given हमारे. I is 4 into 10 raised to the 7. Then I will switch to 8. Eighteen Newton raised to the 50. Simple calculation later. Minus almost minus 3 दिए.
10 plus 3 or 80 80 into 10 raised to power plus 3. 5 step कर दो ये करें. मतलब -7 प्लस बस ठीक हो जाएगा. +7 के साथ तो नहीं करें. Next. The rotational kinetic energy of two flywheels are equal. If ratio of moment of inertia is 1:4, the ratio of angular momentums. हमें दिया rotational kinetic energy same है. Rotational kinetic energy का दिया formula दिया L square by 12. Oh wait, L1 square upon 2I1. It's equal to L2 square by 2I. Because we are given that the rotational kinetic energies are same. I1 by I2 की ratio दी है 1:4. That means L1 by L2 is 1:2. फिर sphere of mass 2 kg and diameter 10 centimeter is rolling at a speed of 5 meters per second. Its rotational kinetic energies. हमें diameter दिया है, mass दिया और linear speed दिया. तो हमने rotational energy बतानी है. Solid sphere. दो मेथड से कर सकते हैं, तो रेशियो से कर दो या सीधा भी कर सकते हैं. Solid sphere है तो point of inertia is lambda square is v square by r square. Square by 5 and v square. Mass is 20. Speed is 5. So rotational energy is tensions. Clear? A rod of length 1.4 meter and negligible mass has two masses 0.3 kg and 0.7 kg tied to its ends. Find the location of point on this rod where rotational energy is minimum, where the rod is rotated about that point. तुम्हें बताना है location of a point of this rod where rotational energy is minimum. Rod of length
1.4 meter. Two masses. What किस एक्सिस के about rotate करें so that rotational energy is done. Concept क्या लगेगा? Rotational energy minimum कब होगी? If it rotates with certain angular velocity, then rotational speed is minimum. If moment of inertia is minimum, I minimum होगा. A moment of inertia minimum कब होता है? When axis passes through center of mass. तो इन दो masses का center of mass कहाँ लाई करता है? अगर मैं center of mass निकाल, इसके coordinate 0 0, length 1.4 है तो इसके coordinates 1.4. X coordinate of center of mass. M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M1. So 14 into 0.7. That means 0.98. 0.98 from now to the center of mass. Either the distance 0.98. Yeah, so 1.4 minus 0.98. So very answer. But the logic is moment of inertia minimum क्या होता है about an axis passing through center of mass? Because आपने parallel axis चलो मैं पढ़ा है किसी भी और axis के about निकालोगे that is ICM plus NH square. mh square हमेशा पॉजिटिव ही होगा तो मतलब I की वैल्यू किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालें तो ICM से ज्यादा ही आएगी तो moment of inertia is always minimum about an axis which passes through center of mass of the body. So basically center of mass निकालना था हमने कहाँ लाई करेगा. Once you know the center of mass, so you can find the answer. It's a thin metal rod of length 0.6 meter is vertically on a straight horizontal floor. The rod is falling freely to a side without slipping. Angular velocity of the rod when it stops and touches the ground. एक रॉड ऐसे है and it starts falling down. तो इसका टॉप एंड किस एंगुलर वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा आगे ग्राउंड? कैसे करें इसे सॉल्व? कौन सा कंसेप्ट लगाएं? When it falls, कौन सी एनर्जी है और किस में चेंज हो रही है? Potential energy is getting converted into rotational kinetic energy. So mg L by 2 because rod की potential energy center of mass की is equals to half I omega square. Rod का moment of inertia so omega comes out to be 3g by L हमारे को दिया 0.6. Approximately 7 radian per second आ जाएगा. Approximate आंसर आएगा. This √50 और 7 point some value आएगी. Seven radian per second. इन क्वेश्चंस को देख लेना इसमें कोई डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर आगे.